Bharat Mungwa Arunachal, Bharat Mungwa Arunachal, Anting Funau Ningasera, Pio Pio Diktum Aisera, Chom Chom Diktum Aikinra, Anting Funau Ningasera, Sikut Seram Ngara, Rakam Saram Resang. The land of dawn-lit mountains, Arunachal Pradesh, is the largest state of the 7 sister states of northeast India. This ancient land is rich in biodiversity and in lifestyle. This extreme eastern part of India is surrounded by the mountain ranges. This land never ceases to surprise us with its rivers and streams and their snow-melted, crystal-clear Himalayan water, and with its flora and fauna. Arunachal Pradesh, situated in northeast India, shares its borders with Bhutan in the west, China to the north, Myanmar and Nagaland to the east, and Assam in the south. The communities of this land have varied rituals and customs and ethnicity. We are overviewing fascinating lives and cultures of 17 major communities living in this state. They welcomed us with their traditional song and dancing in accordance with their customs. The civilization of Arunachal Pradesh has a long history of migration of the ethnicities from Tibet, Burma and Bhutan. This ancient land finds mention in the early literature such as Kalika Purana, Mahabharata, Ramayana. In Arunachal, Parasurama washed his sins, Bhishmaka founded his kingdom, Lord Krishna married Rukmini. The ethnicities of Arunachal Pradesh have been part of India's freedom struggle. The Adi community, for example, has a history of wars with the British colonizers during the time when the freedom struggles were breaking out in other parts of the country. The Adis of the Siang region bravely fought against the British to stop them from entering their habitats at various stages between 1858 to 1911. In the war fought in 1894, known popularly in oral history as Nijom Mimak, a huge boulder stockade which was 10 feet high and 2,000 yards long, locally called Bongal Yapko, was built that held back the advancing troops for several days. The present-day remnants of Bongal Yapko is a testimony of fearless Adis who were defiant to any subjugation by the British regime. Just west of the Lohit River, along with Dibang River Valley, lie the ruins of the Bhismaknagar Fort, which is recorded as the oldest archaeological site in the region, protected under ASI since 1909, and is a sacred heritage of the Idumishmis. The fort near the Kundal River is ascribed to the Chutia Kingdom, a Tibeto-Burmese ethnic group who ruled over the region of Sadia from 12th to 17th century CE. Malinithan is a famous archaeological temple site of Arunachal Pradesh, situated on a 21 meters high hillock overlooking the plains of Assam. The exact period of the temple is unknown,
owing to the absence of written records, but it is estimated to be between 10 to 12th century AD. The Malanithan is located at the base of the Siang Mountains in the Likabali town and a subdivision of the Lower Siang district. Parasuram Kund is another widely known place of pilgrimage in the Lohit Valley. The Bugun community treasure their natural heritage of rich biodiversity and have come forward to establish a community-led biodiversity reserve in their own land. A unique bird species found only in this part of the world is the Bugun Leocicla bird and named after the community. Its discovery brought a lot of international attention to this region as one of India's most exciting biodiversity hotspot. Varieties of orchids, rhododendrons and medicinal plants add to the wealth of the natural resources. ये लामा क्या एरिया में जैसा अभी स्नोफॉल होने की वजह से पूरा पेड़ पूरा गिर गया बैठ गया है तो फिर वो रीजनरेशन थोड़ा दिन में आपको मई अप्रैल में फिर निकलना शुरू होता है तो लेसिकुला का हैबिटेट यही ऐसे जगह में मिलता है और ये कम्युनिटी रिजर्व बनाने का वजह भी ये है कि हमारा एक दो लेसिकुला को बचाना है रेड बंदा यहाँ मिलता है दोनों को बचाने के लिए हमने कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया है. Most of the communities traditionally worship nature and are animists. The shaman or priest performs ritual dances along with chanting and singing to ensure wellness and peace for the households. Some adopted the faith of Buddhism. We observed a member home there, which is an east-facing prayer room called Shesham, where prayers are offered by a lama in the morning and evening. The traditional houses built by these communities show distinctive features and are made of locally grown bamboos, woods and leaves. For instance, the Adis usually take about 2 to 3 days to build a full house. पुराना आमालोक आदि कम्युनिटीर घर बनवातो प्राय 3 दिन लागे जेने कहलेबे आमालोकर समाजर बस्तर मानुबिलाक राज्यर मानुबिलाक आमालोके हाजिरा एनेका नलय माने एतो जेता घर बनाय आमालोके प्रिक आहिबो आमार आजि बनाय आछे तो काली परहि हिबि मोलर सहयोग करिबो एनेका नियमते आमालोके चले. Once a house construction is complete, the Adis celebrate with food and their traditional rice beer. We live in bamboo house, and for all of the opportunity people, bamboo is very important for us because while we still live, we eat bamboo shoot and we make a crop from bamboo, we make house from bamboo, and people when we die after long age, then our grave will decorate with the bamboo. So that's why we live with bamboo and we die with bamboo. ये हमारा गांव काफ़ी पुराना है तो लोग पत्थरों के घर में रहना या हमारे जो चारों तरफ ये फोर्टिफाइड विलेज है तो यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट के लिए 2 गेट है, साउथ गेट और नॉर्थ गेट करके 2 गेट है. ये हमारा एक तरह से देखने से ये हमारा मोनपा जो विलेज है इसका लास्ट आखिरी विलेज जैसा है क्योंकि हमारे बगल में ही
शरतंग हो गया, सामने में मिजी ट्राइब हो गया, तो उस तरह का ट्राइब है। तो इस वजह से शायद पुराने ज़माने में काफ़ी इंटर ट्राइबल जो होता है, कभी कभी ये लड़ाइयाँ होता था, तो उस तरह से तो इसको काफ़ी अच्छी तरह से फोर्टिफाइड किया गया था। Most of the communities practice of decorating the walls of the first room of their house by hanging skulls of hunted and sacrificed animals, along with their weapons, ropes, and other hunting equipment. The traditional method of agriculture here is quite different, and majority of the communities engage themselves in farming, which occupy major importance in their way towards life. They practice jhum cultivation and grow millets, maize, and various vegetables. In Arunachal, the process of tea making is quite unique, which vastly mesmerized us. From time immemorial, the Tangsas have been picking and processing local tea leaves to make their traditional bamboo tea blend. पहले चाय को तूल के ले आते हैं बगान से, उसके बाद डेक्ची में थोड़ा समय के लिए बॉईल करेगा। बॉईल करके उसको फिर निकलेगा, वो एक जो बम्बू का वो बास्केट जैसे बनाते हैं ना, उसमें रख के सुखाता है। फिर तोड़ मोड़ करके गुड़ा बना के उसको बम्बू में ढाल के, उसको जो गुड़ा वाला जो चाय पत्ता उसको बम्बू में ढाल के आग में जला के उसको बॉईल करते हैं। पानी उन्नी नहीं डालता है उसमें, ऐसा ही बॉईल करता है। उसके बाद थोड़ा वो बम्बू जलने से उसका अंडा से पकड़ता है, जो 10 या 20 मिनट उसको आग में लगा के उसके बाद उसको भूनता है। फिर भून के वो तो सब नीचे चला जाएगा बम्बू के अंदर में। फिर उसको ढालता है, ढाल के पूरा फुल हो जाने के बाद फिर उसको आग में डालेगा। थोड़ा 4-5 इंची का वो खाली रहेगा, उसको लास्ट में वो छील के उसको पैकिंग करने के लिए थोड़ा सा रहता है। This tea making process helps preserve dry roasted tea for many years at a stretch. Apart from agriculture, most of the communities engage themselves in hunting, employing various skillful methods and traps. यहाँ पे तीर है, ये बड़ा जानवर को मारने के लिए, और यहाँ पे पॉइजन भी लगा होता है। पॉइजन बहुत दूर में मिलता है, जहाँ बर्फ़ एरिया होता है वहीं पे वो वाला पॉइजन चीज़ मिलता है। यहाँ वहाँ जहाँ नहीं मिलता है ये चीज़ ना। उसके बाद ये जो चिड़िया, चूहा, गिलहरी वगैरह के लिए जो ज़मीन में जितना रहता है, हम लोग जहाँ में चिड़िया ज़्यादा होता है तो उसमें हम लोग गड्ढा बना के उसके गड्ढा में कुछ डाल के और गड्ढा को ऊपर में रख देते हैं। चिड़िया वगैरह आके उसको अगर खाने के लिए ऐसे ऐसे चोंच मारने से तो इसको थोड़ा सा हिलाने से ऐसे गला में पकड़ देता है, तो इसीलिए हम लोग इसको भी बांध के रखते हैं और उसको लेके ना जाए। The Puroik are experts in using different kinds of traps. Gurang is one of the most popular traps. In their dialect, it is called Kubung Mingnam, which means rat hunting trap.
The Khamtis are one of the few ethnic communities known for their ancestral skills of catching and taming wild elephants for use in different daily activities such as transportation, ploughing, lifting, etc. However, this practice was legally stopped in 1972 by the government. Mithun is a large semi-domesticated cattle of the Gaul family, considered extremely valuable by the communities. They rear Mithuns for sacrifices in rituals and exchanges during marriage. The Shedukpen communities have songs to celebrate the local state bird, the great hornbill. हॉर्नबिल है ना, उसके लिए गाता है। हॉर्नबिल आप क्यों इतना चिल्लाता है? मतलब आदमी ने पूछता है, आप इतना क्यों चिंता करके क्यों चिल्ला रहा है बोलता है। और हम लोग अगर एक साथ अगर हम लोग मतलब नहीं मिलने से, एक साथ नहीं बैठने से, हम लोग वहाँ असम में छोंगसो बोल के एक जगह है, अदलगुरी में है, पहले वो रिलेशन है हम लोग, उसमें मतलब मिलेगा। The Apatani communities take pride in their centuries-old indigenous knowledge of making salt. The salt is called tapio, derived from the extract of a wild grass that grows in the forest. They collect and process the grass to make the tapio, which is then consumed with food and drinks. The Khamtis, like the other ethnic groups of this region, have a tradition of slow cooking. Their native dish, pasa, is a fresh river fish soup made with special herbs and is considered a delicacy. The process of preparing the fish is laborious and involves several steps including cleaning, cutting and chopping the fish, followed by grinding it with a long knife on a wooden chopping board. And the mixing of several kinds of local herbs, local species of coriander, Szechuan pepper, basil and Vietnamese mint, salt and red chili powder. Finally, the fish and the herbs are pounded to obtain a smooth grinded mixture. The fish bones are smoked on fire and powdered to be added to the mixture. At the end, water is added to the mixture and then strained with a cloth to get the soup with small shredded pieces of fish in it. The fish is never cooked on the fire and is processed in its raw form.
When we had reached among the communities, we were astounded by their traditional culinary style and amazing dishes they offered us. Instead of utensils, they mostly rely on bamboos and leaves. The traditional cooking methods followed are roasting, steaming, and fermentation. The rangbang is a unique indigenous food made from the sago palm trees that grow abundantly in the forests. Meche or flour is made by crushing logged trunks of sago tree. Food is prepared by adding hot water to the flour and stirring it vigorously until the mixture coagulates to form a thick paste. They steam the paste wrapped in leaf or even fry and have it like pancakes. The rangbang has been adopted by other communities and is popularly known as a famine food as it helps communities survive when bad weather or disasters isolate the communities from supply chains. मरवा को ना पत्थर में पीस के फिर वो हम लोग बर्तन डाल के ना गर्म पानी डाल के फिर उससे बनाता है हम लोग कोल पत्ता ना कोल पत्ता से ऐसे बनता है मरवा से अपंग बना के भी पीते हैं हम लोग का जो पार्टी में पीते हैं ना हम लोग का पूजा वगैरह होता है ना उसमें अपंग बना के पीते हैं हम लोग मेहमान आने से पिलाते हैं All the communities brew their local liquor using fermented millet and rice. The local liquor is served to the guests. Customarily, the host pours the drink in a cup or a bowl from which the guests and the family members take their first sips. It is a fun start to the social camaraderie over food, songs, and merrymaking. ये हमारा ट्रेडिशनल गेम और ये गेम का नाम है शो बोलते हैं पारा शो बोलता है ये गेम का नशा बहुत खतरा होता है पुराना ज़माना में जो हमारा पास ये पैसा वैसा नहीं होते समय में अपना प्रॉपर्टी घर परिवार सब कुछ रख के इवन अपना बीवी बच्चा तक भी ये गेम पे दाव लगा देते हैं तो एकदम रॉयल गेम है छोटा मोटा आदमी नहीं खेल सकते हैं Members are known for making a specialized wheat paste noodle at home called Pudashir Shing, using a unique traditional wooden tool. The noodle is made as a special item during marriage, losar, rituals and festivals, or any party. तो ये डिश का नाम है पुदा ये खाली तो नहीं खाया जाता इसका साथ थोड़ा सा झोल होना जरूरी है तो उस झोल के लिए हम लोग क्या करता है थोड़ा सा स्पाइसी मिर्चा जो कूट के इसमें डाला जाता है और छुरपी जो जैसे कि चीज़ होता है ना वो मिक्स किया जाता है तो इसको हम क्या करते हैं इसका ऊपर में छिड़क देते हैं थोड़ा सा स्पाइसी भी है तो इसको मतलब ऐसा ही मतलब डिश जो रेडी हो जाता है तो ये है हमारा लोसेर के लिए याक का मीट है तो हम लोग लोसेर में याक का मीट बहुत फेमस होता है तो याक सब घर घर में याक ऐसे ड्राई करके महीना भर ये याक मीट को हम लोग पूरा फैमिली मेम्बर के लिए चलाता है Mithun meat is treated as a delicacy.
ये मिथुन मीट है यहाँ का ना, फेमस हम लोग का मतलब यहाँ का लोकल का ना, हम लोग मिथुन को शू बोलते हैं, शू। तो इसको हम लोग पहले ऐसे जलाया जाता है, तो इंसिस्टर समय में ये नहीं डालते हैं, लेकिन इसका ऊपर में इसको काली ऐसे रख के ना इसका ऊपर में से सुखाया जाता है। ये मीट जो यहाँ का फेमस है मिथुन जो ना, हम लोग शादी में ये दिया जाएगा, ये मिथुन लड़की के लिए लड़का लोग दिया जाएगा। तो पूजा में, चिंदंग पूजा में भी इसको मारा जाएगा हम लोग। अगर ये नहीं हम लोग का मतलब इज्जत है ये जो। They also have specific rituals of serving food to special guests or a special relative. Our children, they are not trying to practice the old traditional forms. In this modern situation, our Singphos, a small community in India, we are also facing a little bit of threat. 1 decade's time, tourism has helped a lot, because for the cause of tourism, with the rise of people coming here in our area, we also try to promote and at the same time highlight our old traditional forms through to which we are able to showcase our culture. So that is one of the gifts of tourism. Both men and women are highly skilled in making bamboo and cane baskets for their daily utilities. এইবিলাক বনাইছোঁ সব এই বস্তুটো বনোৱাটো বাঁহটো কয় মাটাং কোৱা কয় আমাৰ চিংফৰ কথাৰ পৰা এইবিলাক সব এই মাটাং পৰা বনোৱা হয় আৰু এইটো সিংনৈ বুলি কয় আমাৰ চিংফৰ ভাষাৰ পৰা ইয়াৰ নামটো এইটো আমাৰ চিংফতে এক হিচাপত ক'লে ইজ্জত বি থাকে দেই এই বস্তুটো ইজ্জত আৰু বস্তু বি হয় এইটো মূল্যৱান বস্তু বি হয় আৰু সেইবিলাক সব একেটাই বস্তু হয় সব মাটাং বাঁহ পৰা বনোৱা হয় The women use simple backstrap looms to weave complex garment patterns and designs for both men and women. The looms are usually fixed on their balconies, where they weave in between household chores. Their brilliant sense of color is reflected in their repertoire of designs and products. इसका स्टोरी है कि इसका जो कोई लोग जो टाइगर का चेहरा उस टाइगर का चेहरा को सोच के बनाया क्योंकि यहाँ में ऐसा है तो फिर कोई बोलता है कि स्पाइडर का जो बुना वाला जाल उसको देखते हुए ऐसा बनाया है डिज़ाइन हमारा ये नेचर को देखते हुए बनाया इसमें जो ये तो अभी चेहरा हो गया ना जो स्पाइडर का जाल से इसको हाथी बोलता है और ये वाला गोरा में आदमी बैठ के ये कोई इंसान फिर खींच के उनको ले जा रहा है और ये पहाड़ है पहाड़ और ये जो नदी जो बहता हुआ इस तरह से वेव होके बह के जाने वाला नदी तो हमारा ये गुस्सों में ये ट्रेडिशनल ये ड्रेस जो है अपना नेचर को जो हम लोग ने यूज़ करता है उसका ऊपर में दर्शा के हम लोग पहनता है Alongside the dresses, the women adorned themselves with several ornaments. They wear necklaces made up of antique silver coins. The ornaments are inherited by the women through generations from their maternal ancestry. ये लड़का का घर से जब जाएगा तब हम लोग को गिफ्ट में दिया जाता है पूरा ये ऑर्नामेंट सब मतलब माँ पिताजी से मिला हुआ है और हम लोग का बहुत सालों से ये चलते आ रहा है The cultures and lifestyles of the ethnic communities
living in Arunachal are greatly influenced by the cultures and religion of the neighboring countries, owing to the ancient practice of barter trade and exchange. पुराने ज़माने में पैसा नहीं था तो उसके बदले में ये सब सामान का इसका न्यारी बोलते हैं और चौथा बड़ा का दाम और चौथा का दाम अलग अलग होता है और उसको जैसे किसी का पास खाने के लिए नहीं है पहनने के लिए नहीं है तो इसको ये उसमें बिजनेस में काम चलाता था और ये सब इसमें ही माने ऐसे ही हम लोग का बिजनेस में चलाता था। हम लोग का ये है ये खाने पीने का चीज़ का भी ये इसमें खरीदने के लिए भी यूज़ करते हैं और शादी ये वगैरह में भी ये सब हम लोग देते हैं वो सब भी देते हैं। The Khamti culture has been showcased with various collections of their traditional items at the Thai Khamti Singpo Museum cum Research Center. In the Rupa Gompa Community Museum, the indigenous Shedukpen traditions remains documented. ये सिलुक बस्ती है, क्लीनेस्ट विलेज है। ईस्ट सियांग का 2 बार मिल चुका है और प्लस 0 वेस्ट विलेज है। अभी तो क्लीनेस्ट विलेज होने के नाते बहुत सारा टूरिस्ट आ रहा है तो हम टूरिस्ट लोग को ये करता है सबसे पहले तो हम लोग 0 वेस्ट विलेज है तो हम लोग प्लास्टिक बंद करता है। प्लास्टिक चीज़ में हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करता है जैसे कि कम पत्ता में खाना खिलाता है और बेम्बू का चूंगा में सब्जी उब्जी पकाएगा और हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा तो नाच गाना जब देखने दिल होगा तो हम लोग लोकली हम लोग का ये है पोनुंग है देलोंग है इस तरह से हम लोग दिखाता है। Songs and dances are part of the community's traditional culture. They involve in singing and dancing in every occasion to express their mood of festivity and merrymaking. You have to witness this fun part of them to see their spirits, to get acquainted with the spirits of these ancient communities. One of the most amazing parts of our Arunachal tour is to have a chance to witness and take part in the annual festival of the Nishish. There are several communities living in this mountain land and each one of them has their own annual festival. And each of the festivals is different from the other. We are fortunate enough to observe the Nyokum festival of the Nishish organized on February 26th every year. Nyokum means came from the Myoing. Myoing means to appease the god and goddesses of the surroundings for bumper harvest, for well-being of the human being. तो हम लोग सदियों से मना के आया है। हम लोग का आदमी जो है मॉडर्निटी में ज़्यादा चला गया, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एडॉप्ट करने लग गया तो धीरे धीरे अपना रूट जहाँ से जड़ को उखाड़ के फेंकने लगा तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे मेन ये ज़रूरी है कि भाषा जानना, अपना भाषा मातृभाषा को जानना ज़रूरी है। मातृभाषा नहीं जानने का कारण से लोग जो है कल्चर का बारे में नहीं जानता है तो उसमें हम लोग मातृभाषा भी सीखे और जो मॉडर्न एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन भी उसमें सीखता है। With the time, the festivity heightens with dances, songs and feasts, with the merrymaking continuing till the end of the day. At the end of the day, when everything is coming to an end, we witness their celebration of identity.
celebration of existence.